फ्रेंड, आज हम लोग 25 अक्टूबर 2020 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो इसमें टोटल 5 आर्टिकल्स है। लास्ट में हम लोग प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला जो आर्टिकल है, यूएस एलाइज वेलकम इजराइल सूडान डील्स बट ईरान पैलेस्टीनियन क्राई। ठीक है, फिर प्रीसियस सैंपल है। फिर उसके थर्ड है जो तुम्हारा आउटलुक ब्लिक फॉर हिमालयन ब्राउन बियर। ठीक है, फिर उसके बाद स्मेल ऑफ फिश, फिर NIS साइन एग्रीमेंट विद एम्स रायपुर। ठीक है, जो पहला आर्टिकल है रिलेटेड टू US allies welcome Israel Sudan deals but the Iran Palestine cry। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो प्रीलिम क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है। जीएस पेपर 2 में किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है? तो बायलैटरल रिलेशंस एंड बायलैटरल्स रीजनल्स एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया and or affecting the India interest, effects on policies and policies of developed and developing countries on Indian interest, Indian diaspora. The Israel-Palestinian conflict, primarily a conflict over the territories, Arab-Israel War of 1948, Holy Land divided into the 3 parts: the State of Israel, Western Bank, West Bank of the Jordan River, and the Gaza Strip. In 1967 war, Israel captured Sinai Peninsula and Gaza Strips from the Egypt, East Jerusalem and the West Bank from the Jordan, the Golan Heights from Syria. Post 1967 war, 3 no's by the Arab world: no peace with Israel, no talks with Israel, and no recognition of the Israel. So अरब कंट्री जितना भी ग्रीन से है वो सारा अरब कंट्रीज है। ठीक है, तुम्हारा ये जो मोरक्को का वेस्टर्न सहारा है, वेस्टर्न सहारा है, वो अरब कंट्री नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सोमालिया भी अरब कंट्री में आता है, याद रखना, सोमालिया भी। फिर लेकिन सोमालिया जिबूती भी आता है, लेकिन इरिट्रिया नहीं आता अरब कंट्री में, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद इथोपिया भी नहीं आता। ठीक है, तो जो इजराइल पीस डील है 1979 में इजिप्ट के साथ हुआ था। इजराइल विथड्रॉ फ्रॉम द सनाई इन रिटर्न फ्रॉम द इजिप्ट रिकॉग्निशन। 1994 जॉर्डन इजराइल एग्रीड टू फॉर्मेशन ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन द वेस्टर्न बैंक एंड गाजा। ठीक है, फिर उसके बाद अगस्त 2020 में यूएई Israel would suspend its plan to annex a part of the occupied Western Bank. सितंबर 2020 बहरीन से भी पिस्ट ऑफ हुआ। अक्टूबर 2020 से सूडान से पिस्ट ऑफ हुआ। सूडान इजराइल पीस डील। सूडान removal from the US list of a state sponsor of terrorism. Israel recognition of the Israel by the countries of the world. फिर इससे रिलेटेड एक प्रीलिम क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद द रेड सी। रेड सी से कौन कौन शेयर करता है? सऊदी अरब करता है, ईरान नहीं करता है, यूएई रेड सी से नहीं करता है। फिर उसके बाद बहरीन रेड सी से नहीं करता है। तो क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड। सूडान करता है। ठीक है, 1-5 हो जाएगा। ठीक है, रेड सी से करता है। ए
फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है प्रीसियस सैंपल, ये से रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और तुम्हारा जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायो डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, awareness in the field of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology, and issue relating to the intellectual property right. सैंपल तो ओसिरिस रेक्स जो है वो तुम्हारा नासा फर्स्ट मिशन meant to return sample from the ancient asteroid Osiris Rex origin, spectral interpretations, resource identification, security, religious explorer, regolith explorer. A 7-year-long voyage and well concluded when at least 60 grams of the sample are delivered back to the Earth. Launch in 2016 and reached its target in 2018. In March 2021, the window for departure from the asteroid opens. Osiris will begin its return journey to the Earth, arriving in September 2023. Asteroid, rocky object that orbit the Sun, much smaller than planet, also called minor planets, divided into the 3 classes, found in the main asteroid belts between the Mars and Jupiter. ट्रोजन क्या होता है कि ट्रोजन्स होता है तुम्हारा एस्टेरॉइड दैट शेयर एन ऑर्बिट विथ अ लार्जर प्लैनेट, ठीक है। फिर नियर अर्थ एस्टेरॉइड विच हैव ऑर्बिट दैट पास क्लोज बाय द अर्थ, more than 10,000 such asteroids are known, out of which over 1400 are classified as potential hazardous asteroid. कॉमेट एंड मेटेरॉइड्स का डिफरेंस क्या होता है? कॉमेट क्या होता है कि फ्रोजन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आर कंपोज ऑफ डस्ट, रॉक एंड आइस, रेंज फ्रॉम few miles to 10 of mile wide. फिर when they orbit close to the sun, they heat up and spew gas and dust into the glowing head that can be larger than a planet. Billions of comets orbiting our sun in the Kuiper belts, and even more distance Oort cloud. Kuiper belt, Oort cloud. Kuiper belt के बाद Oort cloud आता है। फिर कॉमेट एंड मेटेरॉइड के बीच में डिफरेंस क्या है? तो मेटेरॉइड का क्या है कि ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम द डस्ट ग्रेन टू द स्मॉल एस्टेरॉइड्स लाइक space rock. When a meteorite enter the Earth atmosphere at a high speed and burn up, the fireballs of a shooting star is called meteors. A meteorite, when the meteorite survive and the trips through the atmosphere and hit the ground, it is called a meteorite. फिर ये क्वेश्चन प्रीलिम का देख लो। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स स्पेस मिशन एस्टेरॉइड। ओसिरिस जो है वो बीनो एस्टेरॉइड पे ले है। हायाबुसा तुम्हारा इटोकोवा और हायाबुसा 2 रेग्यू, ठीक है। तो ये तो तीनों सही है डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू आउटलुक ब्रेक फॉर द हिमालयन ब्राउन बियर। तो एक रिपोर्ट निकला है हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और तुम्हारा जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी
of the world and society. Silent feature of the world: physical geography, important geographical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone. Geographical features of their location, changes in critical geography features, and in the flora and fauna, and the effects of such changes. GS पेपर 3 में भी क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द कंजर्वेशन इन्वायरमेंट pollution and degradation environment impact assessment. तो हिमालयन ब्राउन बियर जो है उसका साइंटिफिक नेम आता है उसका उर्सुस उर्सुस आर्क्टोस isabellinus, world second largest terrestrial carnivorous after the polar bear. Males का लेंथ 150 to 230 सेंटीमीटर होता है विथ 130 to 500 130 होता है 550 kg का होता है. फीमेल तुम्हारा लेंथ 137 to 183 सेंटीमीटर होता है और वेट 80 to 250 kg होता है. फीडिंग हैबिटेट omnivorous होता है. ग्रास रूट bulbs and other plants, insects and some mammals, carcasses, etc. Descends to the lower level of the feed on the fruit in the autumn. Diurnal होता है. ठीक है. Solitary life except during the mating and from mother with cubs. Least arboreal of all the bear subspecies go into hibernation in a cave or dug out then by October, emerging back in April और मई. ये इतने तरह का बियर पाया जाता है. पांडा हो गया, तुम्हारा एशियन ब्लैक बियर हो गया, फिर नॉर्थ अमेरिकन ब्लैक बियर हो गया, फिर सन बियर हो गया, फिर उसके बाद ब्राउन बियर हो गया, फिर पोलर बियर हो गया, स्लॉथ बियर हो गया. ठीक है. और स्पेक्टिकल बियर भी हो गया. ठीक है. प्रेजेंस में क्या है कि नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल हिमालय इन Pakistan, India, Nepal and the Tibet autonomous region of China and Bhutan, present in the south and western Ladakh, in the upper Suru and Jaskar range in India, in a high altitude range of alpines, meadows, scrubs and sub-alpine forest of Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Great Himalaya National Park and Uttarakhand में पाया जाता है. ठीक है. हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है कि हायर एल्टीट्यूड open valley and the pastures. In summer month they move up to the snow lines around 5,500 meters, and in autumn they descends into the valley. Threats क्या है? हैबिटेट लॉस है, किलिंग बाय द लाइफ स्टॉक्स, herders, poaching for and for illegal body parts, chase, beer, bile use in medicine in countries like China, Japan, South Korea. Beer paws, mints and flat are also traded. They avoid area near to the human settlement. जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अबाउट द स्मेल. ठीक है. A study on olfactogens in the humans. Large genomes wide association study of olfactory gene on human involve a sniffing test incorporating 9,000 people from Iceland participated, asked to smell odors of key indigenous fonts in Lysaurus, cinema, fish, etc. Intensity and pleasantness recorded facts.
perceptions of order by the human, mainly achieved through olfactory receptors encoded by the A855 or genes, but about half of those genes are through the lack of function. So finding of the study क्या है कि some people carry mutations in the trace track amine associated receptors जो कि gene that makes fish order less intense. People vary in this ability to discern the smells of lysis and cinnamon cinnamon found in a more typical uncommon olfactory gene variants influenced ability to name the odors and the intensity of pleasantness associated with those odors. Discovery of common variants in the clusters of the olfactory receptors associated with the increased intensity of trans एंटीहोल. ठीक है. Conclusion क्या है कि variation in olfactory genes influence odor perception in a human, while humans have fewer of olfactory genes compared to the other species. Some of the genes variations in the people make them more sensitive to a particular smell, such as the licorice. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. ठीक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिलेटेड टू द ट्रैक एमीनिया एसोसिएटेड receptor 5 recently seen in the news is correct. It is a gene variant that affects the perception of fish odor in human. It is a thermoreceptor of the human which detects the change in the temperature. नहीं, it is a slowing robots which mic human receptors. नहीं, it is a synthesis sensory system for vision based of psychological modes of retina. नहीं, ये इसका आंसर ये हो जाएगा. It is a gene variant that affects the perception of the fish odor in a human. नेक्स्ट जो आर्टिकल है अबाउट द NI साइन एग्रीमेंट विथ AIMS एम्स रायपुर. ठीक है. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा one of the 11th national institution established across the nation by Department of Ayush, Government of India. Established in 2005 at Tambaram, Chennai, for study of research of Siddha medicine. Siddha, one of the ancient traditional medicine system in India, which was herbs, minerals, metals, and animal substance, depending on the drugs formulations, evolved by the Tamil Sag. Evolved by the Tamil sages. सिद्धा evolved by the Tamil sages. ठीक है. तमिल sages के द्वारा इवॉल्व किया गया है. ये तो कोलैबोरेशन है. ठीक है, इसको देख लीजिएगा. इसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन. इट इज एंशिएंट ट्रेडिशन मेडिसिन सच एज system in India which is use herbs, minerals, metals, animal substance and drugs formation. बिल्कुल सही है. The procedures under the system include vadam, vetanam, yogam and घाना. बिल्कुल सही है. ठीक है.
तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर है सी। ठीक है, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इट इज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होता है। ठीक है, इट कैटेगराइज द इंस्टीट्यूट इन नेशनल इंपॉर्टेंस। हाँ ठीक है, द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। नहीं प्रोवाइड करता है सब। ठीक है, consider the following statement with reference to the Himalayan brown bear. It is found in the भूटान, चाइना बट नॉट इन इंडिया। नहीं, इंडिया में पाया जाता है, यानी कि वन आंसर में होगा। इट इज प्रोटेक्टेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होगा। नॉक्टर्नल प्रिडोमिनेंट एर्बोरियल नहीं होता। 4 का ए। ठीक है, 4 का ए, यानी कि 1 and 3 इनकरेक्ट है। Thank you. Please like, subscribe and share the video.